The barometer of India's stock market, that is the indices like Sensex and Nifty, has reached to a record high. In today's session of NewsKase, we'll be discussing what are the major reasons behind such rise and whether this is going to be followed in near future or not. So let's discuss that. If you see the many newspapers, you'll see a news that the Sensex has reached to a record high of 70,000. And if I talk about today, it is around 71,000. So what are the major reasons behind it? That is the major cause of understanding of whether to invest in the share market or what to do further. In the segment, we will be seeing how share market is performing and what are the major reasons behind it, how the value of the stocks of the companies are increasing or decreasing at the same time. So let's have a discussion over what are the major reasons behind, and then by this FPI inflow, which has also increased the share market to a larger extent, how it is going to help further. Thereafter, we will be leading with stock market itself and the two major stock exchange, that is the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, and thereafter we will be seeing how this performance is being calculated and what are the major aspects, how these companies are being selected into it. So let's discuss that today. The first and foremost thing is the revival in FPI inflows around 1200 crore on Monday last month and has lifted the market sentiment. This simply means the market sentiment has gone up because of the increasing FPI inflow in recent November and then now in December also. And before that, the share market was crashing, was going down because the FPI were outflow. What are the reasons behind it? That you need to understand. तो लेट्स सी क्या रीजंस रहे इसके पीछे. तो सबसे पहली चीज आप ये देखो, जो रीजंस हैं वहां पे हम बात करते हैं. सबसे पहला, एफपीआई इनफ्लो बढ़ा. द एफपीआई इनफ्लो हैज इंक्रीज्ड. एफपीआई इज सिंपली द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आती है, शेयर्स मार्केट में आती है थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स एट द सेम टाइम, और ये इनफ्लो बढ़ा है. अब ये इनफ्लो बढ़ने के दो मेजर कारण थे. एक, जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी रेजिलियंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वर हाई, और दूसरा जो यूएस फेड रेट्स हैं आपके, सॉरी, दैट हैज बीन स्टेबल फ्रॉम लास्ट टू पॉलिसीज which have received, and they are in your future. There are speculations and also the many economic advisors are saying that they will see a cut in the rates in near future, like in 2024 we can expect the rate cuts. Now this part of US Fed rates, stabilization and speculation, will do what? Will decrease the demand of dollar. और जब डॉलर की डिमांड डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टर्स का मूड किधर जाएगा? उस कंट्री की तरफ जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगी और जहां से ज्यादा रिटर्न वो अर्न कर सकते हैं. So in that case, it is becoming very favorable for India's stock market and the FPIs are coming to India. Then the other part is the stable crude oil prices from last few months has led to another positive sentiment in the market, and the recent victory of BJP in the three states of the northern belt of India has also paved the way. Why so? Because when the same party is coming in power again, there will be a continuation in the policy they were taking forward, and this sign gives more boost to the market. Then uptick in GST collection, record GST collection भी है 1.60 lakh crore के आसपास का, and every month it is increasing somewhat, so that is also giving a good prospect. And again the revised growth prospect by many agencies, international agencies, जिन्होंने इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ाया, ग्रोथ रेट के प्रोस्पेक्ट को बढ़ाया फ्यूचर में, उससे भी एक पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, जहां पर कंट्री की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल दिखती है और बेटर परफॉर्मिंग दिखती है. तो बेस्ड ऑन ऑल दीज रीजंस द शेयर मार्केट इज ऑल्सो राइजिंग, एंड लार्जली आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये शेयर मार्केट है, इट इज अ मार्केट ऑफ स्पेकुलेशन, गुब्बारे का मार्केट है. सो गुब्बारे को आप जितना फुलाओगे उतनी पिक्चर अच्छी दिखेगी, बट एट द सेम टाइम स्पेकुलेशन शुड बी which is optimistic and at the same time positively impacting the economy. So these are the things which are increasing.
अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि what are the major reasons which will decrease or which will give a fall in the share market or crash in the share market, so you just have to do the opposite of it. For example, if all of a sudden FPI outflow will happen, the share market will crash or will go down. स्टेबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नहीं है अगर, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में और रुपये की डिमांड कम डाउन हो जाएगी. रिसेंटली जब यूएस के फेड रेट्स बढ़ गए थे तो शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज दैट वाज क्रिएटिंग मोर डिमांड ऑफ डॉलर, और उसकी वजह से जो एफपीआई आउटफ्लो हो रहा था वो काफी विजिलेंट था मार्केट में, लाइक 16,000 करोड़ और समथिंग लाइक एफपीआई आउटफ्लोड. सो दैट वाज द मेजर रीजन कि समटाइम शेयर मार्केट वाज गोइंग डाउन, लाइक 500 पॉइंट्स डिमिनिश हुआ या 1000 पॉइंट्स डाउन हुआ. और इन केस फॉर एग्जांपल अगर अभी जो स्टेट्स थे वहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस जीत जाती, जैसा कि 2018 में एमपी में हुआ था, तो कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट हैपेंड, द शेयर मार्केट हैज क्रैश्ड बाय 500 पॉइंट्स. रीजन क्या था उसके पीछे? द बेसिक रीजन वाज कांग्रेस हैज प्रॉमिस्ड फार्म लोन वेवियर. अब जो कर्ज माफी थी जो कांग्रेस ने इस यहाँ पे प्रॉमिस करी थी, उसकी वजह से काफी बैंक्स के जो सेंटिमेंट्स थे वो गेट डाउन हुए, और बिकॉज ऑफ दैट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर शेयर्स गॉट डाउन एंड दैट लेड टू डिक्रीज इन शेयर मार्केट. सो इट वाज एन स्पेकुलेशन फर्दर, but that time this happened, so this would have happened further also. And if the taxation policies, the economy is not performing well, so that will also be a reason of decreasing the share market at the same time. So this was one thing which you need to know. There might be a question based on what are the major reasons. For example, there is a rise in share market, what can be the following reasons, so that you must know, because statement wise questions भी काफी आते हैं. Then whether this scene will further continue or not, this rally will further continue or not. For example, in last 3 to 4 days you are seeing that from 70,000 to 71,400 something today it is. So it is increasing every day. So whether it is further continue or not, that is one of the major question. So if you see what are the major favorable conditions, first is the global uncertainty and the state of Indian economy, like it is much stable, much resilience at the same time, and the fastest growing economy, and based on all this, this is much favorable market for FPI inflows because investments will have better returns. And thereafter the strong corporate earnings and growth and a politically stable landscape also gives a way so that the FPI will come forward, because that is showing more promising investment returns in the economy. So these are two things you need to know from the perspective of the news which we have covered. This news has been covered from the mint, and now I'll take you some basics, because basics are very important to understand the entire concept. So let's see that as well. In the basics part, you need to know what is stock market or stock exchange or share market. These are interchangeably used with each other. So share market simply it refers to several exchanges, या आप ये कह सकते हैं एक मार्केट प्लेस है जहां पर शेयर्स का बाई और सेल हो रहा है. So simply to several exchanges in which shares of publicly held companies are bought and sold, that I just said to you. Then there are two major stock exchanges जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, that is the Bombay Stock Exchange and another is the National Stock Exchange, that is NSE. The Bombay Stock Exchange is situated in Mumbai, Dalal Street, और इस exchange का basic वो है कि it shows the value of the stocks which are listed into it. So in the Bombay Stock Exchange की अगर हम थोड़ी सी और बात करें, so it was established in 1875, way back. It was the Asia's oldest stock exchange, and over 5,000 companies are listed into it. And thereafter, the benchmark index for Bombay Stock Exchange is Sensex. Whereas for National Stock Exchange, it was established in 1992. And it was first demutualized electronic exchange in India. Bombay Stock Exchange जब शुरू हुआ था तो it was not completely electronic. Initially तो it was like the Dalal Street was the place जहाँ पे ये चीजें होती थी. But with the passage of time, many things happened and they got modernized further. Over 18,000 publicly listed companies are there, and Nifty 50 is the benchmark for NSE. Now certain few key terms like publicly listed companies. The companies which are listed on their stock exchanges that are publicly listed,
and anybody, even the individuals, can invest in those companies' shares. That is called publicly listed company. Whereas for Bombay Stock Exchange, the index is Sensex, and it started with 100 basis point in the year 1978 to 79. This was the year when it started with 100 basis point. So that was the initial point of the Sensex or Bombay Stock Exchange. But currently today, if we see, it is around 71,000. So what we are seeing, the performance or the shares, the value of the shares of the companies have increased from 100 to 71,000 in these years. And this shows there was an increase of almost 710 times in the shares of the particular company's stocks. Similarly, this Nifty, which has been started with 1000 basis point in 1995, started in 1992 onwards, but the basis point started in 1995. And if we see, it is around 21,456. So that shows the company's values has been increased by 21 times almost during this period. This shows the people who have invested at that time or who have invested 10 years back have got huge return on the company's profit. Now you need to know how these indices work, how they calculate the value of the share market, and what happens when the values goes up and what happens when the values goes down. And at the same time, how the selection of the companies happens. For your information, let me tell you that this Sensex is having a benchmark of 30 companies. Whereas in the Nifty, they consider 50 companies to calculate the overall performance of all the companies which are listed. Why they do so? That you also need to know. In this part, if we see, this Sensex and Nifty, which are used to compute the value of a company, and selection is based on free float market capitalization. So what they are checking? They are checking the value of the company. And in the value of the company aspect, if you see further, it is done to evaluate their market performance. And how this is done? This is done through taking a small sample. Why the small sample is taken? Now you tell me, what is more difficult? 5,000 companies हैं, 5,000 सबकी मार्केट परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना एक साथ डिफिकल्ट है, या जस्ट 30 कंपनीज जो लार्ज स्केल साउंड कंपनीज हैं उनको कैलकुलेट करके एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस निकालना डिफिकल्ट है. सो दिस इज मोर डिफिकल्ट. बिकॉज ऑफ दिस दे टेक अ स्मॉल सैंपल एंड द स्मॉल सैंपल इज ऑफ 30 कंपनीज. ये 30 कंपनीज में वो कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं जो लार्जली स्टेबल हैं, मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं. लार्ज कैप का मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेटर है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज और जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है. एंड बेस्ड ऑन दैट द मार्केट सेंटिमेंट्स हैपन एंड वर्क्स. नाउ सिंपली दिस स्मॉल सैंपल विच इज टेकन इज यूज्ड टू मेजर द इंडेक्स, दैट इज सेंसेक्स. कैसे करते हैं? इट गिव्स अ वैल्यू ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ स्टॉक मार्केट. जो स्मॉल कैप सैंपल लिया उससे एक वैल्यू आ जाएगी स्टॉक मार्केट में, एंड देन दिस कंप्यूटेड फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड स्टॉक्स. अब जो सेलेक्टेड स्टॉक्स के प्राइसेस चल रहे हैं उसके बेसिस पे हम इसको कंप्यूट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट द सेंसेक्स वैल्यू कम्स. सो सिंपली द करेंट वैल्यू इज अराउंड 71,000 ऑफ ओवरऑल सेंसेक्स, दैट इज द क्यूमुलेटिव ऑफ दीज 30 सेट ऑफ कंपनीज. अगर निफ्टी होता तो वो 50 कंपनीज का सेट हो जाता वहां पे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस. फेयर एनफ. नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट, दैट इज व्हाट रोल प्ले मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज ऑफ कंपनी बताता है और उसकी एग्रीगेट वैल्यू को बताता है. सिंपली मीन्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स. जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उनकी टोटल मार्केट वैल्यू बताता है, उसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, या in a short form it is called as market cap. The formula to know the overall market capitalization of a company is total number of companies outstanding shares जो हैं और price of one share. For example, there is a company A. इस कंपनी A के पास 10,000 शेयर्स हैं
और इसका जो शेयर का प्राइस है, ठीक है, शेयर्स हो गए, और इसके 1 शेयर का जो प्राइस है वो है 2000। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी का, या उस कंपनी की टोटल वैल्यू या साइज को कैलकुलेट करना चाहें, तो इट विल बिकम, दिस कंपनी विल बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ अराउंड 2 crore, I guess. Yes. And based on that quality, the companies are further divided into large cap, mid cap and small cap. और जो शेयर मार्केट में ज्यादातर कंपनियों का हिस्सा होता है, सो मोर देन 85 to 90% आर लार्ज कैप कंपनीज, बिकॉज ये कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती हैं, देयर मार्केट परफॉर्मेंसेज आर ऑल्सो गुड. बट दिस इज नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्टर, दे आर बीइंग टेकन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेक्टर से कोई और कंपनी होगी, पेंट के सेक्टर से कोई और कंपनी होगी. सो डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूड्स द कंपनीज, और वो कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड होती हैं. लाइक टॉप 30 कंपनीज आर बीइंग लिस्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, और 50 कंपनीज लिस्टेड होती है निफ्टी के एस्पेक्ट में एनएसई में. Fair enough. The role of market capitalization and market performance, you know. Now you need to understand what is the importance of these indices, why these indices are being calculated. That you need to know. So let's see that. The importance, it is the barometer of market behavior, how the market is performing, what is the market sentiment that it shows, correct? And then it is the benchmark of portfolio performance. किसी कंपनी के पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट की फ्यूचर परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी, यू कैन स्पेकुलेट ऑन दैट आल्सो, एंड इट गिव्स अ सेंटिमेंट एंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट. लाइक द इंडिसेस, अगर इंडिसेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल इफ सेंसेक्स which is around 71,000 today, if it decreases to 70,000, it will show there is a negative sentiment coming. And if it goes up like 72,000, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बढ़ रहा है इन द मार्केट. Thereafter, the sorting and comparison of various companies, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किन कंपनीज को इन लूप रखना है जिनको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा जा सकता है, दैट आइडिया इट ऑल्सो गिव्स. एंड thereafter it is further used for passive fund management. Largely शेयर मार्केट में हम अपने पैसिव फंड मैनेजमेंट को यूज करते हैं, बिकॉज नो एक्टिविटी इज बीइंग डन, you are investing in the share market. Furthermore, it gives a better comparison on the returns on the investment in stock market. For example, आपने बहुत सारे आइडियाज, एडवर्टीजमेंट्स भी देखे होंगे, इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल मीडिया में दिख जाते हैं आपको, who gives certain advices कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे. बट दिस लार्जली डजंट हैपन. दे आर जस्ट द मार्केट गिमिक्स टू इंक्रीज द शेयर्स एंड शेयर्स वैल्यू एट द सेम टाइम. So for that purpose, you need to know the entire segment, the importance of these indices, how they perform, and what are the major role they do forward. The one more part is important for you. Before investing in the share market, always remember about these key points, where you need to understand what are the major returns, whether the company is stable or not. And largely people advise to invest in the long-term investments. That is more than 1 year, not less than 1 year. That gives better prospect to the shareholders. And the performance of the company is very important. Their recent reports are very important, and based on certain things you can further invest. After this, knowing the indices importance, now we'll move forward to the body which regulates this share market and stock exchanges largely. So the body is Security and Exchange Board of India, SEBI, which was established in the year 1988 and got a statutory status in 1992. The entire discussion of SEBI is important from the perspective of recent news like the Adani issue of stock markets, overpricing का issue जो आ रहा था, उसके अलावा और भी बहुत सारे issues थे, जैसे सहारा के issue में जो चिट फंड वाला aspect था. So these are the things where SEBI becomes very prominent, and you may expect one question from there as well. So head office in Mumbai, regional offices are in New Delhi, Calcutta and Chennai. Fair enough. It regulates and develops the capital market. Share market is a part of this capital market of the securities market and non-security market. Capital market में होता है, उसमें share market comes first. Within the capital market, there are two aspects. One is primary market, another is secondary market.
The primary market is the fresh issue market, where company issues their shares for the first time, and this company do to the general public, to the public directly. यहाँ पे कंपनी ही प्राइसेस भी फिक्स करेगी शेयर्स के, and there is no place like share market for this, and this is done to increase the investments or to raise the fund for further investment within the company. तो वो प्राइमरी मार्केट का एस्पेक्ट होता है. दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट होता है, जिसको आप स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट डील्स इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज और स्टॉक्स. सो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्सन ए अगर ये स्टॉक होल्डर ये बी को सेल करेगा, यहाँ पे कंपनी का रोल एक तरीके से नहीं रह जाता है. सो बी फर्दर सी को सेल कर सकता है, या अगेन इट कैन सेल बैक टू ए. सो दीज आर द पीपल जो मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे अपने डिमांड और बाकी उस एस्पेक्ट पे खरीदते और बेचते रहते हैं. वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्राइमरी मार्केट, जो आईपीओ की हम बात करते हैं, जो आप लार्जली न्यूज में देखते हैं कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट में ही इशू होता है, सेकेंडरी में नहीं. ये याद रखिएगा. प्राइमरी मार्केट में इशू होने का मतलब है आईपीओ इज व्हेन द कंपनी इशूज इट्स शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम टू पब्लिक. सो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. अगर वो फर्स्ट के बाद सेकेंड टाइम करती है तो वो एफपीओ कहलाता है, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर. बट इन बोथ द वेज द कंपनी sells it to the public directly and it fixes in the IPO the amount itself, just to increase more fundraising aspect. Fair enough? Capital market will be dealing in another session, because that is a big session and that is important from your perspective also. Now let's come back to it. It regulates the working of stock and intermediaries such as stock brokers, merchant bankers, mutual funds and registers, FII, that is the foreign institutional investors. So these are certain works which do, और सेबी ही आपके रेगुलेट कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को, एक ओवरसाइट रखता है. ये आपको हमेशा याद रखना है शेयर मार्केट के उसमें. There are certain more functions about SEBI which you need to know. The first such is it promotes investor education and training of intermediaries of security market. For example, financial advisors को, या somebody who is interested into financial trading, they give training and educational awareness also. It prohibits fraudulent and unfair trade practices also, कि कहीं पे कुछ fraud वो चल रहा है. For example, recently आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ थी फिन इन्फ्लुएंसर्स की. In that particular thing, what they were doing the fraud activities, and based on that they were generating money, and many investors were getting cheated with getting trapped on that. And the inspection part they did it in the Adani, in the Sahara case and other cases also. They conduct inquiries whether the shares are overvalued or they are on the exact prices. And then the audit of stock exchanges is also done by SEBI. So these are the things which you need to know from the share market aspect. And based on this, certain key ASP that you must understand. That is the reason behind the rise in share market, and then the stock market itself and the role of SEBI. So thank you so much for joining me today on the NewsKase. I hope the session was much useful for you, and I'll see you again with another set of NewsKase. Thank you.